ये वीडियो अलजेब्रा के दो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में है, कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड या फिर अनचेंजेबल, मतलब वो वैल्यूज़ या वो क्वांटिटीज़ जो फिक्स रहती हैं या जो चेंज नहीं होती। इसी तरह वेरिएबल का मतलब है अनफिक्स्ड वैल्यूज़ या अनफिक्स्ड क्वांटिटीज़ और changeable quantities. Now let's try to understand it with the help of an example. Let's suppose number of days in a week. Is it changeable or is it fixed? We all know we have 7 days in a week. So this is the fixed quantity, or आप कह सकते हो it's constant quantity. Similarly, number of hours in a day, 24 hours, which is fixed quantity. For example, ये गाड़ी है और इसको मूव करना है from this point to point this. इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करना है। जैसे ही ये ट्रैवल करना इस पाथ पे स्टार्ट करेगी, इसकी स्पीड इनिशियली कुछ और होगी, कर्व पे इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद उसकी स्पीड दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। करते हुए इसकी स्पीड 3 टाइम्स चेंज हुई है। सो स्पीड is the variable quantity क्योंकि it is changing. So the best example of the variable quantity can be speed. Constant quantities usually numbers होती हैं. For example 5, it's a fixed quantity. 8, 7, 24, 30, क्योंकि ये fixed values हैं, so these are all constant quantities. So any number can be the constant quantity. Any number. Is the constant quantity. वेरिएबल क्वांटिटीज़ को, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटीज़ चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। उनको हम अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, X, Y, Z और A, B, C। फॉर एग्जाम्पल स्पीड है, स्पीड स्टार्ट्स विद S, सो आप स्पीड को S से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। सो Parhakoos, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स साथ में लिखे हुए हैं। सो now pause the video and try to identify the constants and variables. Remember, a short reminder, usually numbers क्योंकि fixed होते हैं, so they are constants, और letters usually unfixed होते हैं या किसी भी चीज़ को represent कर सकते हैं और case to case change होते हैं, so they are usually variables in algebra. So now let's start off. In 5x is a term जो variables और constants आपस में लिखे जाते हैं या combine होते हैं तो they make a term. तो ये एक term है और 5 क्योंकि number है, fixed value है, it's a constant.
एंड x, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वॉट एवर डिपेंडिंग अपॉन द केस. सो वी डोंट नो इट, इट्स चेंजेबल, तभी हमने इसको लेटर से प्रेजेंट किया. दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. Now let's see in the second example, minus 7xy. Again, this is a term, combination of different letters and different variables and constant. Here, minus 7 is the constant value, and xy, they both are variable quantities. Let's try for this one. Here we have one term, this is the other term, so we have two terms here. So we have different variables, so we have two terms here. So first term mein minus 5 is the constant and x is the variable. और second term में plus 7 is the constant and xy is the variable quantity. इस वीडियो को पॉज करो और गैस करने की कोशिश करो कि ये क्वांटिटीज वेरिएबल हैं या कांस्टेंट है. सो टेक योर टाइम. Now let's see hours in a day. Variable or constant? वैसे hours in a day is 20. We have 24 hours in a day, so it's fixed or constant. Temperature throughout the day. सुबह का टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, शाम का टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, और दोपहर में टेम्परेचर इज़ डिफरेंट. सो टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे. You cannot give a fixed value to it. Okay, so you can represent temperature by letter T. So it's a variable quantity. Speed of the car. Speed of the car depends upon the traffic or type of road. So speed आप एक fixed value नहीं दे सकते. So it can be represented by S, and this is a variable quantity. Number of days in August. So can you give me a fixed value for it? Every year we have 31 days in the month of August. So this is the constant quantity. Grades of students. So हर दफ़ा हर एग्ज़ाम के बाद हर एग्ज़ाम में डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रेड्स बनते हैं और उनके नंबर्स भी चेंज होते रहते हैं. So can you give a fixed value for it? No. So you can represent it by the letter G or by the letter X. Since you cannot give me a fixed value for it, so this is a variable quantity. I hope ये concepts आपको समझ आए होंगे. So have a happy learning.